ओके बेटा, देखो आगे। क्वेश्चन, राइट ऑन द क्वेश्चन। A particle is moving such that S means position. Okay, such that position S is 3t square plus 2t plus 5. Okay, find speed at time t. Find speed at t is equal to 1 second. Also find the speed between 0 second and 4 second. All right. Yes, sir. Join this meeting again, okay? Because this is 45 minutes timer, okay? Zoom. Okay, sir. Same link, okay? Yeah. Solve this. Sir, it's coming that at t equals to 1 second, it's 8 meter per second, and between 0 to 4, it's 24 meter per second. 0 to 4, how much? 24 meter per Oh, second. wrong. Sorry, 0 to 4, matlab at 0 seconds, it's 2 meter per second, and at 4 second, it's 26 meter per second. At t is equal to 0, your speed is, sorry, t is equal to 1. You are giving me the right answer, that is 8. Understood, I understood. Yes, sir. But I'm asking like find the speed between 0 second and 4 second. What is the answer? सर 4 सेकंड पर 26 और 0 सेकंड पर 2 आ रहा है, तो फिर उनको माइनस नहीं करेंगे या फिर क्या करेंगे? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, स्पीड देखो। बिटवीन। बेटा यस सबसे सर। पहले कंसेप्ट समझते हैं। ऑलवेज अप्लाई द कंसेप्ट डायरेक्ट। आपको पहले कंसेप्ट समझना है। देखो, अगर आपको स्पीड पूछा है टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इट मीन्स दैट दे आर आस्किंग इंस्टेंटेनियस स्पीड, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट डिफरेंशिएट this ds by dt. If you differentiate, you will get 60. Then at t is equal to 1, it will be 6. It is 60 plus 2, I think. So it will be 6 plus 2, that is 8. It is correct, like I understand. ठीक है। यस सर। अब बेटा देखो ध्यान से, इसमें पूछा है एवरेज, इसमें टाइम इंटरवल दिया है। तो टाइम इंटरवल का यस मतलब क्या सर। है? एटलीस्ट ये आस्किंग एवरेज स्पीड। ओके। अब यस अगर एवरेज स्पीड पूछा है मान लीजिए इन क्वेश्चन में, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो 0 से 4 में बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चला? 0 से 4 में जब एस दिया है आपको 3t² प्लस 2t प्लस 5, तो एस एट टी इज इक्वल टू 0 कितना होगा बेटा? 5। एस एट टी इज इक्वल टू वॉट? 4 सेकेंड, कितना होगा? सर वो 4 सेकेंड पे कितना होगा बेटा? रखो इसमें ना। ये सर 61। कितना हो गया? 48 प्लस 8 प्लस 5 कितना होगा? 61। समझा रहा है इसका मतलब क्या है कि क्या चीज है? मैंने क्या यस लिखा सर है? सर। मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कितना चला? ओरिजिन ले लो बेटा, ओरिजिन।
टाइम जीरो है तो पार्टिकल कहाँ पर है? टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल गिरा, कितना है बेटा? 5 मीटर। जैसे ही टाइम 4 हुआ, अब पार्टिकल कहाँ है? 61। 61। कितना डिस्प्लेसमेंट लिए पार्टिकल ने? 61। कितना चला पार्टिकल 0 to 4 में? 61 - 5। 5। ये कितना हो गया? 56, सॉरी 50 समथिंग, हाँ, तो 56 एवरेज स्पीड मीटर है। कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, दैट इज हाउ मच? 14। 14। ठीक है बेटा, यस सर। समझ में आ गया? मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। हम्म, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको।